England 156 पे all out, Sri Lanka completely dominating in the Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. Unbelievable performance from Sri Lanka. Brilliant bowling. थोड़ा सा slow service था भाई, मगर 250 ऑलमोस्ट 260 270 रन तो बना सकते थे इन लोग भाई. 156 पे ऑल आउट हो गए. वेरी पोर फ्रॉम इंग्लैंड. देयर वर्ल्ड कप होप्स आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड. ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इज इंग्लैंड. दे नीड अ मिरेकल राइट नाउ विद द बॉल. भाई कोई भी नहीं चल रहा. जॉनी बेयरस्टो नहीं चल रहा. डेविड मिलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, बटलर, ये टॉप नामा दे रहा हूं मैं आपको. हाई फ्लाई, मतलब टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड नेम्स दे रहा हूं आपको, लाइक गुची एंड फेंडी एंड ऑल दीज all these brand names. They've all collapsed. They've all collapsed today. Angelo Matthews coming out of nowhere like the Undertaker, coming in, picking up wickets. Zabardast, bowling कराने. उन्हें जल्दी समझ क्या पाया, ये पिच थोड़ा सा स्लो है. You started using cutters. उसका एक्सपीरियंस था. फील्ड में भी जॉन्टी रोड्स बन गया. पॉइंट से आके उन्हें फेंक दिया बॉल वहां पे. Incredible performance from Sri Lanka, but England, man, this is so disappointing. मैं इतना रेट करता हूँ इंग्लैंड टीम को. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ये टीम को, because they've changed cricket in the last 4-5 years. मगर ये जो चल रहा है यहाँ पे बैंगलोर में 156 ऑल आउट, मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं. मे बी अदर पीपल हैड डिफरेंट प्रेडिक्शंस, बट आई थॉट इंग्लैंड वुड विन दिस गेम. दे वुड एटलीस्ट कम बैक इनटू द टूर्नामेंट. नाउ इट्स लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. दे हैव लाइक a 2% chance. Miracles do happen in cricket. Let's see if they defend the score. लेकिन अभी तो भाई बहुत बहुत मुश्किल दिख रहा. कोई भी नहीं चल रहा. यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट मिला, उसके बाद कुछ भी नहीं. Ben Stokes was like batting, but he was just one man all on his own, and even he couldn't do anything in the end. He couldn't produce that magic kind of innings. Yeah, very very poor from England. They look like they've ripped apart. End of day's play for them looks very very difficult. भाई अभी मैं क्या बोलूं. But yeah, it's been very disappointing. No intent, no rotation of strike. Poor shot selection. आप like हाथों में दे रहे catch. Running between the wickets abysmal था. मतलब कोई calling नहीं बराबर, कोई कुछ नहीं. They don't look hungry right now. They don't look like they're here for a fight. And yeah, they're almost on the way back, man. I think it's been extremely disappointing. From Sri Lanka's point of view, even Lahiru Kumara, he came back. He bowled so well today. Zabardast. Rajita भी बेहतरीन था. तीक्षणा का आप फिगर्स देख लो. 8.2 overs, 21 runs, 1 wicket, economy of 2.52. Angelo Matthews 5 overs, 14 runs, 2 wickets, 2.8 economy, and Lahiru Kumara 7 overs, 35, 3 wickets. बेहतरीन performance from Sri Lanka. They were outstanding today. Field में भी, bowling में भी, they kept putting pressure on England. They knew कि भाई England would try to look to attack them, and they sniffed blood and attacked them straight away, picked up the wickets and put England under tremendous pressure. Very sloppy batting, very poor shot selection. These are not defending champions. They don't look like defending champions. Very, very poor. There's going to be a lot of criticism, especially from the English media, because this has been a very shoddy performance. Like ठीक है, आप एक मैच हार जाओ, 2 मैच हार जाओ, मगर यहाँ पे तो भाई आप compete ही नहीं कर रहे. श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, you're not even competing. This and it continues to be one-sided. तालिब अहमद खान बोल रहे भाई नींद आ रही. भाई I know one-sided मैच हो रहे, लेकिन अगर आप श्रीलंका के साइड से देखें तो भाई फॉर देम उन लोग बहुत खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे. वर्ल्ड चैंपियंस
को अभी 156 ऑल आउट कर दिया, तो दे विल बी थिंक, मगर यस दिस हैज बीन अ वेरी वन साइडेड टूर्नामेंट एंड द वर्ल्ड चैंपियंस हैव जस्ट नॉट शोड अप इन इंडिया. दे हैव बीन वेरी वेरी पोर, नो इंटेंट, नथिंग. इतना जबरदस्त बैटिंग लाइनअप, ब्रांडेड बैटिंग लाइनअप को आप रख के ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो इट इज वेरी वेरी disappointing, man. Shameful at one point, I think. Like, ऐसा कैसा कर सकते भैया, ऐसा कैसा विकेट आप फेंक दे रहे, वो कर दे रहे, कोई शॉट आप बराबर खेल रहे नहीं, एक दो स्टार्ट्स मिले तो वो भी फेंक दे रहे आप हवा में, कैच दे दे रहे. या इट्स बिन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पुअर, बीन वेरी डिसअपॉइंटेड. पाकिस्तान के चांस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाई, चांस है. पाकिस्तान को भी है, अफगानिस्तान को भी है सर, दोनों को चांसेस है. अभी तो खत्म है. इंग्लैंड ऐसा दिख रहा है उनका चांस आज खत्म हो जाएगा, अगर ये हार गए तो देयर इज नो कमिंग बैक फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस इन माय ओपिनियन. बट पाकिस्तान को चांस है, दूसरी टीमों को भी चांस है. Australia is looking good right now. They're looking like that fourth spot contender. Lekin they also have to play New Zealand. They have a couple of games which could be a bit tricky. They have to play Afghanistan too, I think. So there's a few games that Australia have to also win. अब देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉप 4 का फाइट. अभी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ. इंडिया now again that game against England, they can't take England lightly, but they will be extremely confident going into that game. लखनऊ में भाई बॉल टर्न होने वाला है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. It's going to be dry. I have no doubt about it, because यहाँ पे हल्का सा जो ड्राइनेस था वहां से it's troubling the England batsmen. No doubt Tikshana bowled really well, but it's not like a rank turner or anything like that. There were still runs to get in this on this pitch, in this ground. It wasn't as flat as the England Pakistan game, but definitely 280 300 तो मार सकते थे, at least 250 plus. So very very disappointing from them, and they look like just done, man. I don't know what's happened. Era coming to an end. I mean, respect to them, the way they played cricket in the past, but in this World Cup in particular, they've been very, very shoddy. It's been a very poor performance and very disappointing. जो हम लोग entertain होते थे ये team से, अभी तो भाई उल्टा हो रहा है अभी. And yeah, it's been very poor. Johnny Bairstow, David Malan, that partnership is not working, man. It's not working. Jason Roy किधर है? Jason Roy को लेके आओ वापस. Where is that aggressive intent? Joe Root consuming too many deliveries too. Baseball का उल्टा खेल रहे हैं उन लोग. They are not playing attacking cricket, and when they try to attack, it's because of the lack of strike rotation, lack of boundaries in the power play. They had somebody like a Phil Short or Jason Roy. I think that might have helped them. They have the top two is a bit more conservative, especially David Malan. I think Bairstow, he's not clicking to थोड़े से boundaries मारा उन्हें इधर उधर, लेकिन it's not the Johnny Bairstow that we're used to, जो हम लोग देखते, जो destructive batter है. Ben Stokes भी he's coming back from injury, he's not looking the part. ठीक है, he batted, he scored a few runs, but overall no one has. आप लिविंगस्टन को लेकर हर गेम में उन लोग चेंज कर रहे हैं, हर गेम में बदला कर रहे हैं. ये इन्हें आ रहा उन्हें आ रहा, म्यूजिकल चेयर्स पूरा चल रहा है इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में, लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा. और इतना खराब खेल रहे हैं कि भाई मैच में कोई कंपटीशन ही नहीं है. आप ना ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर रहे, ना आप अफगानिस्तान से कम्पीट कर रहे, ना आप श्रीलंका से कम्पीट कर रहे. इट्स साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका तो नंगा कर दिया भाई इंग्लैंड को, नो डाउट अबाउट दैट. सो इट्स बिन वेरी वेरी पुअर, वेरी disappointing, and I don't know where to go from, where they will go from here. They're going to be very dejected, and like I said, the World Cup hopes are hanging by a thread, and today is probably going to be end of days play for them. If they lose today, it's done, and most likely they will lose. They need a miracle. They need Mark Wood to bowl a sensational spell. They need Adil Rashid to come and take a hat trick, and they need something. They need a miracle today. Otherwise, it's टाटा बाय बाय फॉर इंग्लैंड. इट्स नेवर over till it's over. अभी है सेकंड इनिंग है, देखना पड़ेगा वो, but it looks like we're heading towards another one-sided game, and it's very disappointing, especially when you're defending champions, when you have such a good reputation. At least you need competition. आप लास्ट ओवर में हार जाओ ठीक है, मगर आप ऐसा हार रहे हैं, मतलब आपको टीम्स आके खाली फोड़ दे रहे हैं, आके just like smashing you all on the park. You become the whipping boys of the World Cup. Who would have thought England will be the whipping boys? मतलब Netherlands भी बेटर परफॉर्मेंस दी, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. यहाँ पे तो भाई आप कुछ भी नहीं. ठीक है, कल 400 खाए नेदरलैंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव बीन कंपीटिंग हियर एंड देयर. इंग्लैंड मैन, इतने प्लेयरों को रख के आप ऐसा खेलेंगे तो it is going to be disappointing. People will criticize them. People will laugh at them. I still respect them as a team. I think what they've done in the last 4-5 years, they revolutionized cricket. They've changed cricket. आप जो South Africa की team देखो जैसा खेल रही है, आप रोहित शर्मा को देखो, there's a bit of England influence there. You can see the way they played, especially Owen Morgan influence, I would say. लेकिन right now the executions has been very poor. There's no player, कोई भी नहीं चल रहा है उन लोगों की team में. No player in form. Nobody taking responsibility. Nobody fighting. They look done and dusted.
dead and buried, lethargic in the field. And even with the bat, they don't look hungry for runs. They don't look like they want to stay there and score runs. And they're just throwing wickets away left, right, and center. And it's all I can say. It is disappointing, man. You don't expect that. They brought in Moeen Ali today. He failed. They bought Livingston. He failed. They bought Chris Wokes back. उन्हें भी डक पे चले गया. तो भाई बहुत अफसोस की बात है. श्रीलंका मगर भाई जबरदस्त करे. एंड्रू मैथ्यूज कहाँ से आ गया? अंडरटेकर भाई उन्हें आके क्या बॉलिंग कर रहा है. ही अंडरस्टूड द पिच स्ट्रेट अवे कि भाई थोड़ा सा हल्का स्लो है, मैं स्लोअर वंस डालूंगा, कटर्स डालूंगा, इन लोगों को फंसा दूंगा. और क्या फंसाया उन्हें. हल्का सा थोड़ा सा टर्न ये वो होता, थोड़ा सा ग्रिप होता पिच, तो लोग परेशान हो जा रहे. एंड इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. लाइक दे कुड हैव स्कोर्ड वे मोर रन्स देन दे डिड टुडे. अब देखना पड़ेगा क्या होता है सेकंड इनिंग्स में. लुक्स लाइक 99% Sri Lanka will win this, but never say never in cricket. England need a miracle. They need a lot of wickets. They need to put pressure on Sri Lanka. थोड़ा सा कंपेटिटिव गेम बनाओ यार. कब से हम लोग वन साइडेड ही देख रहे हैं. थोड़ा सा कुछ कंपेटिटिव बनाओ गेम. होपफुली आपके कोई सवाल है कमेंट से भेजिए. फिर हम लोग मिलेंगे उसके बाद पोस्ट मैच में. we'll have the analysis. We talk more about England and Sri Lanka. Hopefully Faiz will join us too, and hopefully it will be a good talk, because right now it's very shocking what's happening in the Chinnaswamy. The news is England are all out for 156 runs. Sri Lanka need 157. Top wicket taker was Lahiro Kumara. Top scorer was Ben Stokes, 43 runs. And yeah, stay tuned for the post match. That's all for now, but we will catch you after the game. Take care, everybody, and see you soon.